Welcome students. Now I welcome you all to new session of subject biology online subject teaching organized by Defense Services Academy Shahapur. Now see, all you have studied the subject biology up to your 10th standard. You have studied a small basic points. Now what is a difficulty level in biology? That in biology subject you have to study a vast theory. Secondly, the critical condition is that the spelling of words, they are hard one, and only while learning you are not practicing the spelling. That's why you can't pronounce well. So whatever the lacunas till your 10th standard, that all lacunas we have to remove and make our subject hard one and simple one. So the name biology comes from the two words. One is a bias, means a living, and logos, it means a study. Simply we can say biology is a subject which deals with the study of living organism. Now this all the detailed study of living organism, first time these all observation and detailed study performed in the year 1800. Now the scientist, the renowned scientist, Lamarck, who was a naturalist who collect the information from the surrounding nature, regarding the various existing plant, existing animal and all that. So Lamarck collecting the observation, and second, the Treviranus, he was a Greek philosopher and he was keenly interested to study the new thing that what happened in the surrounding, why that thing is and what for it. So in the year 1800, Lamarck and Treviranus, these both scientists collect all these observations and put forward the term referred as a biology, that is a study of living organism. Now next, the study of living organism, it may be plant, it may be animals, or it may be a small creature in the sense that we can't see with our open eyes. So that's why this living organism categorized into those particular plant kingdom, animal kingdom and small microorganism. Now these three streams, the study of plant referred as a botany, which discovered by the scientist Theophrastus, where there is a study of plant. Now next one, that is a zoology. It deals with a study of animals from primitive one means a very small, बहुत छोटे साइज के जितने भी प्राणी वर्ग है उससे लेके तो बड़े विशालकाय प्राणी वर्ग तक जो स्टडी की जाती है वो होती है जियोलॉजी. जुवन मीन्स एनिमल, बोटेन मीन्स प्लांट. Now next, the third, this study of zoology performed by the scientist Aristotle. Next one, those creature which cannot be seen by open eyes referred as a microorganism, and for the first time these study details are made by the scientist Antony von Leeuwenhoek. That's why for botany, which deals with the study of plant,
Theophrastus referred as a father of botany. For zoology, the study performed by the scientist Aristotle, that's why he referred as a father of zoology, and Antony von Leeuwenhoek, father of microorganism. In this way, these three streams are separate, where the detailed study about plant, animal and microorganisms are done. Okay, coming to our next point, that is, which are the important terminology in the subject biology. बायोलॉजी विषय में जो महत्वपूर्ण टर्म्स है वो क्या है? The first term, which is referred as a life. Life, this particular word deals for a living organism. Now, what is life? Life, it is a complex organization of complex molecule. Organization of complex molecule means भिन्न भिन्न तरीके की जो भी molecules atomic level के बाद पाए जाते हैं, these molecules aggregate and forms a clump. Now next, these molecules when aggregate, they express in terms of the different types of chemical reaction, which form a series of chemical reaction, and series of chemical reaction results in growth, first factor, second factor, development, third factor, adaptation, fourth factor, responsiveness, and fifth factor, reproduction. Now looking to this, all 5 factor, growth क्या होती है? Now growth ये तब पाई जाती है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ये किसी पर्टिकुलर फूड के ऊपर डिपेंड होता है. सो ग्रोथ इट ऑकर्स व्हेन द ऑर्गेनिजम्स गेट न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म गेट न्यूट्रिशन which helps to increase. It is an irreversible increase in size, वॉल्यूम एंड वेट. जैसे जैसे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये न्यूट्रिशन लेता है, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन उनके फीडिंग हैबिटेट के अनुसार, वो न्यूट्रिशन आफ्टर डाइजेशन इट क्रिएट्स अ एनर्जी, बिकॉज दैट न्यूट्रिशन इट कंटेन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल एटसेट्रा. तो जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो उस पर्टिकुलर एनिमल का साइज इंक्रीज करने में, वेट गेन करने में मदद करता है. उस पर्टिकुलर फिनोमिनन को कहा जाता है ग्रोथ. दैट इज सिंपली वी कैन से इंक्रीज इन साइज. द नेक्स्ट वन, दैट इज डेवलपमेंट. नाउ द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन that how that animal form. तो ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत होती है वो होती है सब सेलुलर लेवल से, और सब सेलुलर लेवल में फॉर्मेशन होता है अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स का, जिसमें होते हैं न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, मेसोसोम, फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा. अब ये सेल ऑर्गेनेल्स along with the मैट्रिक्स, हर एक सेल के अंदर एक लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट मैट्रिक्स कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म. एंड फाइनली द सेल इज एनसर्कल्ड बाय द सेल एनवेलप which is called as the cell wall. Now these cell form the cellular organization. Aggregation of cell forms a particular tissue aggregate and it forms a particular organ. और इस प्रकार से अलग अलग ऑर्गेन्स फॉर्म होके एक पूरे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का उत्पाद होता है या उसकी निर्मिति होती है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. Third point, that is adaptation.
Now adaptation, it deals with a positive changes in that animal. It is the inherent capacity of that animal, or we can say quality of animal. Adaptation इस तरह से होती है कि एनिमल जिस सराउंडिंग में रहता है उस सराउंडिंग में खुद को कैसे ढाल सके, जो भी चीजें उसको घातक है उससे खुद को बचा के कैसे रख सके. So these positive changes which help the animal for its own survival referred as the adaptation in that particular animal. Next one, responsiveness. Responsiveness is ability to give response to external stimuli. कि बाहर से आने वाले जो भी संकेत है उस एनिमल में रिसेप्टर्स ऑर्गन के द्वारा रिसीव किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल एग्जांपल जो आपने 9th-10th लेवल पे भी पढ़ा है. द प्लांट मिमोसा पुडिका, a small plant having the layer of leaves, bilateral leaves on both sides. Now when you touch the plant, आप जब plants को touch करते हैं उस समय all the leaves of the plant shows the drooping movement. Means एक साथ उस पत्ते के पूरे leaves जो होते हैं, छोटे जो होते हैं, वो एक साथ droop कर जाते हैं. क्यों? To protect the plant, because it feels that whatever the stimuli coming from the external environment, it may be dangerous. Same in case, if you touch the hot plate, अभी आपने गरम कोई प्लेट के ऊपर फिंगर रख दिया या हाथ रख दिया, तुरंत हाथ खींच लेते हैं. Why? Because that hot sensation cannot tolerate by your hand. So responsiveness is a particular phenomena which protect the animal from the external dangerous surrounding. बाहर में जो भी ऐसी संभावनाएं है जो उस एनिमल को नुकसान पहुंचा सकती है, उस संभावना से या उस खतरे से एनिमल खुद को दूर रखता है, उसी को कहा जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस. देन रिप्रोडक्शन मीन्स नई उत्पत्ति ये की जाती है रिप्रोडक्शन के द्वारा. दो मोड से रिप्रोडक्शन के, आइदर द एनिमल फॉर्म द न्यू कॉपी by asexual reproduction or sexual reproduction. Now in asexual reproduction, only we get the exact Xerox copy of the individual, whereas in sexual reproduction we get a changes in the next generation. So these are the certain points which are considered, which are important point. First one growth, second one development, third one adaptation, fourth one responsiveness, and finally the reproduction. लेकिन इन 5 पॉइंट्स को जब कंसीडर किया गया उसके साथ ऐसे बहुत सारे छोटे पॉइंट्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. उसमें से कुछ पॉइंट्स होंगे साइज एंड शेप ऑफ द एनिमल्स, वेदर दे आर प्रिमिटिव और हाईली इवॉल्व्ड. सेकंड पॉइंट, that is a metabolism which produces the energy, and that energy accelerate the various life activity. Now metabolism includes nutrition, that is intake of food material, digestion, that is degradation of complex food material into simpler one to produce the energy, then circulation, excretion, removal of waste material from the body. Like that, so many processes are there. Next one, movement and locomotion. Movement and locomotion means displacement of animal from one place to another. कि एक जगह पे जो भी एनिमल है उस जगह से दूसरी जगह जाना, उसको कहा जाता है मूवमेंट. And that movement achieved by the locomotory organ.
हलचल करने के लिए अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग अंग होते हैं। छोटे एनिमल्स में सीलियरी मूवमेंट सीलिया के द्वारा, फ्लैजेलरी मूवमेंट फ्लैजिला के द्वारा। Then in some animal 4 limbs are there, hind limbs are there. So likewise, they are making the movement which help them for survival. खुद को जिंदा रखने के लिए या विपरीत परिस्थितियों से दूर रखने के लिए मूवमेंट एंड लोकोमोशन ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस प्रकार अलग अलग छोटे से छोटे ऑब्जर्वेशन ये कलेक्ट किए गए, उनको स्टडी किया गया, पर्टिकुलर टू स्टडी व्हाट इज लाइफ एंड व्हिच आर द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। नाउ ऑल दीज लाइफ प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव कहते हैं, वेदर इट में बी प्लांट और वेदर इट में बी एनिमल, वो चाहे प्राणी वर्ग हो, वो चाहे वनस्पति वर्ग हो, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग तरीके की ये जैविक प्रक्रिया या उसको कहेंगे हम लोग लाइफ प्रोसेसेस, ये कैरी करते हैं इन देयर सर्वाइवल कंडीशन व्हाइल दे आर सर्वाइविंग इन द एक्सटर्नल सराउंडिंग। नाउ द ऑर्गेनिज्म व्हिच परफॉर्म द लाइफ प्रोसेसेस, वो पर्टिकुलर सजीव जो पूरी लाइफ एक्टिविटीज को कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या खासियत होना चाहिए? दैट फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ केमिकली एंड फिजिकली डिफाइंड स्ट्रक्चर। केमिकली एंड फिजिकली डिफाइंड स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इंटरनली in that animal so many chemical reactions are carried on. Now these are called as endergonic process, जो उस प्राणी के शरीर के भीतर होती है, जिसमें अभी हमने डिस्कस किए various types of metabolic process which finally responsible for production of energy to carry on the life processes, as well as the removal of waste material which may fatal to the important organ system of that animal. And physically it means the external appearance, the activities performed by animal. It may be movement for self protection, movement for food material, all that. Now in this animal, these animals are highly evolved. Highly evolved का मतलब होता है organized. Organized means इन प्राणी वर्ग में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम ये इस तरह से डेवलप होते हैं जिस तरह से उनके शरीर में अलग अलग क्रियान्वयन प्रक्रिया होती है। जैसे डाइजेशन से संबंधित है तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप है, सर्कुलेशन से संबंधित है सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उस प्रकार से नर्वस सिस्टम डेवलप है। तो ये अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम है, जिन ऑर्गन्स में वेल डेवलप होती है ताकि वो प्राणी सुचारू रूप से पूर्ण संचालन कर सके, अपने हर एक एक्टिविटीज का पूर्ण संचालन कर सके। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज a highly evolved organism. Next point is that they are self-directing. Self-directing means they are not waiting for any response. वो किसी की राह नहीं देखते, क्योंकि खुद के एक्टिविटीज के ऊपर जो कंट्रोल करना होता है वो एनिमल खुद ही करता है, ड्यू टू द इंटरनली डेवलप्ड सिस्टम और रेगुलेटरी सिस्टम जो उस एनिमल में पहले से ही होता है। दैट्स व्हाई दे आर रेफर्ड एज अ सेल्फ डायरेक्टिंग, मींस खुद को ही सूचना देना और होने वाली एक्टिविटीज को स्वनियंत्रित करना, दैट इज कॉल्ड एज द सेल्फ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट वन सेल्फ रिप्लिकेटिंग, मींस उसमें वो क्षमता होती है वो एनिमल में कि अपने ही तरह की
दूसरी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द सेल्फ रिप्लिकेटिंग। एंड लास्ट, सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये प्राणी वर्ग जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण से खुद को बचाने के लिए, खुद को लाइव कंडीशन के लिए ये हर एक बाहर से आने वाले स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं उसी तरह से। अब एक एग्जांपल जो आपने 10th में भी पढ़े होंगे कि इफ यू टेक एक ग्लास बीकर में आपने सिंपल वाटर लिए और उसमें कुछ अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोन्स वो छोड़ दिए। नाउ अमीबा इज एक्वेटिक इन नेचर, so that amoeba swim or float inside that beaker water. They move with the help of pseudopodia, but suddenly if you pass the slight electric current or if you put a drop of chemical, so at that time you will see that on the corner of that beaker all the amoeba will gather together to protect themselves from the electric current or to protect themselves from that harmful chemical. So these qualities are attained by any living organism which help them, वो सारी जो चीजें हैं उनको मदद करती है लाइव प्रोसेस सक्सेसफुली कैरी ऑन करने के लिए।